Okay, so हम हमने रिलेट हम वी आर रिलेटिंग द हैमिल्टोनियन विद द यूनिटरी ऑपरेटर. सो हम ये भी कह सकते हैं कि दी ये जो हैमिल्टोनियन है जनरेट्स बेसिकली इन्फिनिटेसिमल टाइम एवोल्यूशन. और ये इस वजह से कहा जा सकता है बिकॉज it tells the differential equation to obey the wave function, and yeah, and this u basically then describes the finite time evolution. Okay, now अब हम इसके देर आर टू केसेस. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई है दैट इज that can be solved, yeah. And but there are two cases, one where we could think about the Hamiltonian as time independent and the Hamiltonian as time dependent. Uh, so let's say solving, we want to solve the differential equation. Which differential equation? That is जो अभी हमने लिखी है iota h bar u dot, which is equals to h u. Now there are two cases. तो दो cases कौन कौन से? We have two cases. Number one, where we consider the the Hamiltonian h as time independent, time independent, yeah. And so one could write this equation as iota h bar u dot is equals to hu. And this, let's say we consider that h and u are numbers. For now, h and u are not numbers. Basically, h and u are operators or matrices. But for the sake of simplicity, let us consider that h and u are numbers, and then we solve this equation. So, to solve this equation, consider the Hamiltonian and u as numbers rather than numbers rather than operators or matrices. Yeah. So for simplicity हम ये बात कर रहे हैं to solve this equation. और अगर इसको इस तरह से लिखें as numbers, so iota h bar d by dt u is equals to h u के बराबर, and you know iota h bar du over u which is equals to h into dt. Yeah. और अगर इन सब को सॉल्व करें तो जो सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा? u would be equals to the exponential minus iota h bar uh, t, sorry, इसको sorry, so this is minus iota h t over h bar, or exponential, or you could also write it as u is equals to e to the power minus iota एच टी ओवर एच बार. यहाँ पर हम ये कंसिडर करें दैट इज एच एंड कैपिटल एच दैट इज द हैमिल्टोनियन, एंड यू दोनों नंबर्स हैं. और दूसरा ये कि एच जो है वो इनफैक्ट टाइम इंडिपेंडेंट है. सो इन ऑर्डर टू जनरलाइज for the operator to be matrices, we need to come up of some notion of exponential of matrices. Yeah. So ये तो हमने यहाँ पर सिर्फ ये बात की है कि एच और यू जो हैं वो नंबर्स हैं, लेकिन अगर हम एच और यू को बुनियादी तौर पर मेट्रिसेस कंसिडर करें या ऑपरेटर्स कंसिडर करें तो हमें कोई जर्नल इसका एक्सपोनेंशियल ऑफ मेट्रिसेस नोटेशन करना पड़ेगा. ठीक है ना? सो
in order to generalize generalize that the operators are matrices rather than number, uh, one needs to to come up with some some notion some notion of exponential of matrices, आई क्या मतलब हो गया, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ मेट्रिसेस का मतलब हो गया कि सो फॉर सो फॉर ऑपरेटर एम और मैट्रिक्स, हम क्या लिख सकते हैं, हम ई टू द पावर एम दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ एन ऑपरेटर और मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन विच गोज फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी वन ओवर एन फैक्टोरियल एम टू द पावर एन, ये हमें मालूम है, दिस इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन. सो दिस टेलर सीरीज expansion is convergent or must be convergent in order to give a finite answer. Then this will provide some provide the definition of the operator. Provide the definition of the operator. Yeah. So क्या मतलब है? So we have so if u is equals to minus iota h bar t over, sorry, h into t over h bar is the solution, uh, then solution when h and u are operators, then one could write this equation in Taylor series expansion u is equals to summation over n is going from 0 to infinity 1 upon n factorial times iota with a minus sign uh, t over h bar into the Hamiltonian whole to the power n, इस तरह से लिखा जा सकता है. और अगर से फॉर एग्जांपल वी से दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो हम इसको चेक कर सकते हैं. कैसे चेक कर सकते हैं? बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस. सो चेकिंग दैट दिस is a solution of differential equation, we take a derivative of this equation u dot which is equals to, अगर इसका डेरिवेटिव लें तो this would become समीशन ओवर एन इज गोइंग फ्रॉम, सो डेरिवेटिव जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे इस टेलर सीरीज एक्सपेंशन को, तो जो पहली टर्म आएगी वो कांस्टेंट आएगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो. सो रादर देन टेकिंग फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू जीरो, हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? समीशन एन इज इक्वल्स टू वन से. सो एन इज इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी जाएगा. देन वी वुड हैव वन ओवर एन फैक्टोरियल, द क्वांटिटी जो पहले से मौजूद है. देन जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, जब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जब इसको सॉल्व डिफरेंशिएट करेंगे तो n को नीचे लेकर आएंगे और n की पावर माइनस n माइनस वन हो जाएगी, फिर ब्रैकेट के अंदर को डिफरेंशिएट करेंगे. सो इसका मतलब है वी वुड हैव n
और क्या हो जाएगा, और ब्रैकेट देन वी वुड हैव माइनस आयोटा, माइनस आयोटा टी ओवर एच बार इंटू एच होल टू द पावर एन माइनस वन। और फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर वी वुड हैव माइनस आयोटा ओवर एच बार इंटू एच। या रिमेंबर एच जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट अभी हमने लिया हुआ है, ठीक है ना, तो एच डिफरेंशिएट नहीं होगा। और ये जो पूरा फैक्टर है, लास्ट ब्रैकेट इसको हम पहले कर लें, सो सिंप्लीफाई करें, सो वी वुड हैव माइनस आयोटा ओवर एच बार इंटू एच summation over n is going from zero, sorry, 1 to infinity, 1 over n factorial into n into minus iota t over h bar into h whole to the power n minus 1. So let m is equals to n minus 1 उस पावर के अंदर। और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा ओवर एच बार into h summation n is going from 1 to infinity, इसको लिखा जा सकता है n into n minus 1 into n into minus iota t over h bar into h to the power n minus 1। और अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं और n की जगह m ले लूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा ओवर एच बार एच समीशन, अब n इज इक्वल टू जीरो से हो जाएगा, बिकॉज अब m की n माइनस वन की जगह हमने क्या ले लिया, वन अपॉन m फैक्टोरियल इंटू माइनस आयोटा t over h bar into h to the power m, which is the solution of the differential equation which satisfies, yeah. So therefore we could say that u dot, which is equals to minus iota over h into h u के बराबर है, ये क्या कर रहा है, gives the desired differential equation. Yeah, so this gives you the desired differential equation because you took a derivative, और derivative लेने के बाद हमारे पास ये solution आ गया. So this was the case. This was the simplest case when you said, okay, H is time independent. Now let's say we do the second case where the H is time dependent. Yeah, अगर H time dependent है उस सूरत में क्या हो गया? So let's say हम दूसरा केस करते हैं, नंबर टू। The Hamiltonian is time dependent. Yeah. So if H is time dependent, so if H is time dependent, क्या मतलब है कि H is equals to H of T है। Yeah. So if H is H of T, and again U and H were numbers instead of operators, उसी तरह से जैसे पहले हमने किया है, तो क्या होगा, if U and H were numbers instead of operators, or matrices, then U dagger, U dot would be equals to H of T into U. Yeah, so for now हम iota H bar को खैर बात कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए। सो H H सो जो आपके पास जो H बार है दैट इज इक्वल्स टू वन, और iota का हम रिमूव कर रहे हैं, जस्ट वी वांट टू नो हाउ वी कैन एक्सपेंड इट। यप। सो this implies this means that the unitary operator
unitary operator uh, is just is just the integral integral from some time t naught to t. या सो हमारे पास u of t जो है वो क्या आ जाएगा. नाउ वी वुड से the unitary operator u which goes from time t naught to t. So we have unitary operator going from time t naught to t, some initial time t naught to for some final time t, and this is equals to again the exponential function. But now the exponential function uh, would have an exponent which is the integral of the Hamiltonian going from t naught to t. Yeah, we would have minus iota h bar as some constant term, and then we have an integral from t naught to t h of t, let's say कोई और variable लेने t prime dt prime and this quantity. So there is now a difference, as you can see, when we have h as independent of time. The differential operator does not act on time, but now the differential operator acts on time. So we would have the unitary operator, which would be an exponential of an integral. Yeah, and explicitly this is defined by some power series expansion, उसी तरह से जैसे पहले हमने किया. और क्या करेंगे explicitly this can be defined by the power series expansion. और पावर सीरीज एक्सपेंशन अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखी जाएगी. दैट वुड बी u of t comma t naught again going from t naught to t, summation over n 1 upon n factorial. Then we have some bracket minus iota over h bar integral t naught to t h of t prime dt prime and whole bracket to the power n. So this is Taylor series expansion of the exponential. Yeah. So exponential function can be expanded in terms of Taylor series expansion. Now to check that if u and h are just numbers instead of operators, then if one takes the time derivative of u, क्या हमारे पास वही इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन आती है. दैट वुड गिव यू अ चेक दैट the solution for that equation is some unitary operator. So now now to check again क्या करेंगे. डेरिवेटिव लेंगे. डेरिवेटिव ऑफ दिस it would be u dot which is equals to summation over n 1 upon n factorial. Then again we would have n as the coefficient. We take minus iota over h bar integral t naught to t, then h of t prime dt prime to the power n minus 1 of h of t. जब ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा. h of t आ जाएगा. सो u डॉट जो है वो बराबर हो गया किसके. h ऑफ h आपके पास मौजूद है. और अगेन हम क्या करें. टेकिंग m is equals to n minus 1. So we would have u dot which is equals to summation over remember वो उसी तरह से हम करेंगे summation over n. m is equals to 0 to infinity 1 upon m factorial uh, times minus iota over h bar integral t naught to t h of t prime d t prime
टू द पावर m h ऑफ t। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो अगेन वी गेट क्या चीज़, u डॉट इज इक्वल्स टू h ऑफ h टाइम्स u, h times u. Yeah. So if h and u are numbers, then this is the solution of differential equation. So ये चीज जो आपके पास आ रही है, this is only true if h and u we have taken as numbers. So we emphasize here. So if h and u are numbers rather than operators or matrices, this is the solution of differential equation. Yeah. So now अगर h and u are operators rather than numbers, अब हम let's say अगर h और u जो हैं they are operators, then so in the जैसे हमने पीछे वाले केस में जब हमने टाइम इंडिपेंडेंट का केस किया था, the solution was some was again we got some solution which basically gives us conformity with the actual differential equation, and then we prove that u is unitary, but यहाँ पर थोड़ा सा difference होगा. So now here we have h is a function of time, not independent of time. सो अगर ऐसा केस है तो u डॉट ऑफ h ऑफ t u के बराबर हो जाएगा, एंड h हैज सम एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी अपॉन टाइम. या सो प्रीवियस केस में जहाँ पर h एंड u आर ऑपरेटर्स, एंड then in the previous case you got h as an independent of time, the solution was same, independent of time, whether h or u are numbers or operators doesn't matter in the previous case, but in this case it does matter. That why? Because h is a function of time. So we could think about, so for the case of h being independent of time, the the uh, the solution is same uh, if h and u are numbers or operators. Yeah. बट यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन है वो u डॉट विच इज इन फैक्ट h ऑफ t है rather than h, that is it is h has, that is h has an explicit dependence dependence on time. On time. So this sort of differentiate our case from our present case from the previous case. So it will always appear to the left of what is being integrated. Yeah. And so in a simple case, h of t and h of t prime is equals to 0, but in our case h of in this present case h of t and h of t prime is not equals to 0, that is their commutator is not equals to 0. Yeah. And so we would say, and it will always appear to the left of what is being integrated.
सो जो पहला केस है, ए, a simple case of h and u are numbers. So we could say, so for the previous case, and for h and u are numbers, they commute. They commute. I h of t comma h of t prime is equals to 0. So ये उस वक्त तक सही है अगर हम इवन इन द प्रेजेंट केस में भी कर लें, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट एच एंड यू आर नंबर्स. देन अगर एच एंड यू आर नॉट नंबर्स, देन उस सूरत में ये कम्यूट नहीं करते हैं ना. सो दिस इज ट्रू इन द present case as well, provided provided h and u are numbers. Yeah. So the present case is this. Yeah. Now दूसरा केस क्या हो सकता है, बी. दूसरा केस ये हो सकता है कि h and u are not numbers. Now let h and u are operators or matrices or some complex case. Then उस सूरत में we would say that h of t comma h of t prime is not equals to 0. So they do not commute. So if h is a function of time and h of t is not necessarily equals to h of t prime. So one would say, so if h is a function of time, then h of t is not necessarily equal to h of t prime. And if they are not necessarily equal to h of t prime, so there has to be some special case where h of t does not commute with itself at different times. Yeah. So so there has to be a special case where the uh, h of t does not commute with itself at different times. At different times. Yeah. I h of t, h of t prime, that is, this does not commute with with itself. Yeah. So, for example, again, quantum harmonic oscillator, whose frequency is a function of time. So the Hamiltonian is given by some h is equals to p square upon 2m. You know the Hamiltonian of harmonic oscillator, where omega would be, अगर frequency को omega से जाहिर करें, then omega would be a function of time. So the Hamiltonian at one time does not commute with the Hamiltonian at other time. So this is some special case. For example, uh,
For example, consider the case of the case of quantum harmonic oscillator whose frequency whose frequency uh, omega is a function of time. So, so the Hamiltonian, so the Hamiltonian is given by, Hamiltonian कैसे लिखें? That is p square upon 2m plus half m into omega square x square. Yeah. और यहाँ पर ओमेगा जो है, that is basically omega is a function of time. Yeah. So the Hamiltonian, so the Hamiltonian Hamiltonian at one time at one time does not commute with Hamiltonian at at other time. सो अब हमें इसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे. दैट इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर कि यूनिटरी ऑपरेटर कैसे निकाला जाए. सो यहाँ पर हम ऑब्वियसली वो लंबा है, नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे. बट वी वुड बी जनरेटिंग अ सीरीज दैट वुड बी नोन एज द डायसन सीरीज. और यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट आएगा पाथ इंटीग्रल्स का, फाइनमैन पाथ इंटीग्रल्स का, और पाथ इंटीग्रल ऑपरेटर का या टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का. उसको पाथ एवोल्यूशन ऑपरेटर भी कहते हैं, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर भी कहा जाता है. और दैट वुड गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनमैन पाथ इंटीग्रल. सो नेक्स्ट टाइम हम, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमें साबित कर, हमें ये निकालना है, यूनिटरी ऑपरेटर की डेफिनेशन निकालनी है. Provided we consider two complexities. Number one, h is a function of time. Number two, h and u are not are operators rather than just simple numbers. So using these two complexities, हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर की डेफिनेशन आएगी दैट वुड बी कंसिस्टेंट विद दैट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने इनफैक्ट लिखी है एज u डॉट इज इक्वल्स टू h times u. Yeah. So which is an alternate method of sort of finding or evaluating the time evolution of a quantum system. That is, rather than using Schrodinger equation, we use this approach that is using some linear operator operating on the state vector giving its time evolution. Yeah. So that we would do next time. इसको आज यहीं पर छोड़ते हैं, next time continue करेंगे.